नमस्ते, हमेशा खुश रहो बिटिया। दिस इज JV'n डॉक्टर मीनाक्षी सोनी, डिपार्टमेंट ऑफ होम्योपैथिक रेपर्टरी, फैकल्टी ऑफ होम्योपैथिक साइंस, ज्योति विद्यापीठ, वुमेन्स यूनिवर्सिटी जयपुर, डिजिटल वर्जन 2.0। This is our clinical class and our topic is differential diagnosis. When we take a case, so we can cover some points during case taking in our case taking format. In the case taking format, the one point is differential diagnosis. So, what is differential diagnosis and why this is important? So the process of differentiating between two or more conditions which share similar sign or symptoms. So that is डिफरेंशियल डायग्नोसिस। जब हमारे पास एक डिसीज होती है, उस डिसीज का जब दूसरी डिसीज से सिमिलैरिटी होती है, तो हम उसे क्या करते हैं, अलग करने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ सिम्टम्स, विद द हेल्प ऑफ साइन, विद द हेल्प ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो हमें उसे डिफरेंशिएट करके एक फाइनल डायग्नोसिस बनाना पड़ता है। तो जिसके साथ हम उसे डिफरेंशिएट करते हैं, दीज डिसीज आर द डिफरेंशियल डायग्नोसिस। A differential diagnosis is a list of possible condition or disease that could be causing your symptom. It is based off the facts obtained from your symptom, medical history, basic laboratory result, and physical examination. After developing a differential diagnosis, your doctor may then perform additional tests to begin the rule out specific condition or disease and come to a final diagnosis. Many conditions cause similar symptoms. For example, many infectious disease causes fever, headache, fatigue, mental health. Many mental health disorders cause the sadness, anxiety, sleep problem. तो हमारे पास जो इन्फेक्शियस डिसीज है, जैसे आप डेंगू ले लो, टाइफाइड ले लो और चिकनगुनिया, अगर आप तीनों कंडीशन को देखते हो तो तीनों कंडीशन में फीवर होता है, पेशेंट को हेडेक होता है और फटीग होता है। तो दीज आर द कॉमन सिम्टम ऑफ द डिसीज। बट हम फाइनल डायग्नोसिस कैसे करते हैं? हमने डिफ्रेंशिएट करने के लिए ये तीन डिसीज ले ली। अब हम तीनों डिसीज के सिम्टम्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे। उसके लिए जो भी हमारे पास एग्जामिनेशंस हैं हम उसको करेंगे। उसके बाद हम पैटर्न जो रहेगा, जैसे फीवर का पैटर्न है, फीवर का पैटर्न टाइफाइड में अलग मिलता है, डेंगू में अलग होगा एंड चिकनगुनिया में अलग होगा। प्लस उसके साथ में अलोंग विथ कुछ एसेसरी सिम्टम्स मिलते हैं, वो भी अलग होते हैं। तो हम ये लेने के बाद फिर उसका इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, लैब इन्वेस्टिगेशन, और उससे हम अपना एक फाइनल डायग्नोसिस बनाते हैं। तो इसके लिए हमें ज़रूरत होती है डिफरेंशियल डायग्नोसिस करने के लिए जो सिमिलर डिसीज़ है उनको कलेक्ट करने की। बट हमें सभी डिसीज़ का नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि हम देखते हैं अलाइड साइंस में, हमारे प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन में। सेम ऐसे ही मैनी मेंटल इलनेस जो रहती हैं वो भी हेल्थ डिसऑर्डर, मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर जो होते हैं वो एक से होते हैं, उनमें सिमिलैरिटी होती है। जैसे सैडनेस हो गया, एंजाइटी, स्लीप प्रॉब्लम, ये सारे डिसऑर्डर में मिलेगा आपको। ओसीडी, सिजोफ्रेनिया हो गया, बाइपोलर डिसऑर्डर्स हो गए, डिप्रेशन हो गया, इन सब में आपको ये सिम्टम्स कॉमन मिलते हैं। तो आपको डिफ्रेंशिएट करना होता है। How it is used? A differential diagnosis is used to help diagnose physical mental health disorder that cause the similar symptom. How will my provider make a differential diagnosis? Most differential diagnosis includes a physical exam and a healthy history. During a history, you will ask about your symptom, lifestyle, and previous health problem. You will also be asked about your family health problems. Your provider may also order lab tests for a different disease. Lab tests are often done on blood or urine. For example, you may see your healthcare provider because you have a skin rash. Rashes can be caused by a wide variety of conditions. Causes can range from mild allergies to the life-threatening infections. To make a differential diagnosis of a rash, your provider may
Do a thorough exam of your skin. Ask if you have been exposed to any new food, new plants, or other substance that could cause an allergy. Ask about recent infections or the disease. Consult medical textbook to compare how your rash looks to rashes in other conditions. Perform blood or skin test. These steps can help your provider narrow down the choice of what is causing your rash. So, this is the differential diagnosis method, and the topic is completed now. Hope you can understand this topic, the differential diagnosis. If you take your case, so please understand how to take the differential diagnosis of the case and how to create a differential diagnosis and how we can finalize the diagnosis. That is our final diagnosis. Thank you. Hope you are understand with my session. If you have any query, please mention in the comment box. I will resolve it.